This is not just a piece of news. It is the story of a bond between a father and a son. A story that redefines love, courage, and the very limits Hello of and welcome human to my strength. YouTube channel. For perhaps Dr. the first Sukant time in here. the world, an 85-year-old father donates What his comes to kidney your to mind when save you his think of ailing an son's life, 85-year-old man? becoming the oldest Someone living organ donor. who is retired, who is probably past the best years of life, who doesn't have much to offer to this world other than his blessings, some financial help, lots of love, and lots of goodwill for the younger generation. But what if I say that this elderly gentleman has much more to offer in the form of a part of himself to serve another life? I'm going to share such an example before you that will be a landmark and remarkable example. In fact, it was a landmark or remarkable achievement for us. We also published this achievement in the Indian Journal of Transplantation. So I'm telling about a case of a kidney transplantation where an 85-year-old person came forward to donate a kidney to his 59-year-old son. By all parameters, an 85-year-old living donor is the oldest living donor in the world, and we are fortunate, we are privileged to have been part of this team. This was a team of surgeons which was led by Dr. Subodh, who is the most experienced kidney transplantation surgeon in Odisha and also one of the most experienced kidney transplantation surgeons in India. And I personally took care of the nephrology team, and we accomplished this kidney transplantation almost more than a year back in December 2024, and we patiently waited for a little more than a year to bring forth this achievement before a wider public. In between, we also got the opportunity to get this particular story published in the Indian Journal of Transplantation, this remarkable achievement that was rewriting the age limits or redefining the age limits as far as kidney donation is concerned, because this gentleman was the oldest living donor as far as most of the published literature is concerned. So coming back to this particular case, here was the 85-year-old person who came forward to donate kidney to his 59-year-old son. Now, of course, the recipient is also 60 years old, so effectively they are both senior citizens now. And why this is remarkable, because in our country, also in the world, there is a mental innovation, and there are also many innovations as far as elderly donor is concerned. You know, when a person gets into the situation of having end-stage kidney disease in the family, and there are not too many options of having a living donor within the family, and the only person is an elderly person, whether elderly father, elderly mother. Often age becomes a contraindication, and even without evaluation, the elderly person is rejected, that they cannot be taken forward as a donor, because conventionally 65 years is considered as the upper age limit, and beyond that we consider them as marginal donors. Often beyond that we stop evaluating those persons, we discourage such donors from the family, and that creates a significant limitation as far as the donor pool is concerned, because the donor pool in any case is very limited, and expansion of the donor pool is what is the most important aspect, because many people in this world die in want of an organ. They are suffering from an end-stage kidney disease, they need a kidney, but there is simply no donor available. So by expanding the donor pool, in this particular case, we could achieve a successful transplantation. It has been more than 1 year, and both the gentleman, the recipient, and his elderly father, the patriarch of the family, they are both doing well. And we took this opportunity, I personally took this opportunity to have an interview with them. Of course, I have been talking to the recipient on various occasions during his post-transplantation follow-up, but this was a particularly special occasion where I took the opportunity to have a one-to-one conversation with the elderly gentleman, the donor, and the recipient, who were thankfully both are doing excellent, both are doing wonderful, and the recipient, of course, is living a normal life free of no longer requiring dialysis, which is a remarkable achievement for the recipient and very satisfying for the transplant team. And why I'm sharing this, because
this will prove an example that age no longer should be the only defining criteria. A complete clinical evaluation, no matter what the age is far more important before ruling out that a donor is fit or not. This expands the donor pool and also gives a chance to give the benefit of a living donor kidney transplantation to a recipient who would have a remarkably different life after a successful kidney transplantation. So I'll take you to listen to this whole interview where I got an opportunity to talk to the gentleman and his father, what went through their mind before they decided to go ahead with kidney transplantation, what were the inhibitions on the part of the donor, or in fact what made him come forward as a donor. And at the end, I thank the elderly gentleman for setting an example for future generations, for not just in our part but across the world, to understand that elderly donation is a feasibility, is a possibility, and it is very much important for us to acknowledge that these people can be valuable donors as far as kidney transplantation is concerned. This is not just a piece of news. It is the story of a bond between a father and a son. A story that redefines love, courage, and the very limits of human strength. For perhaps the first time in the world, an 85-year-old father donates his kidney to save his ailing son's life, becoming the oldest living organ donor. When his son stood at the fragile edge between life and death, there were no questions in the father's mind, no fear, no hesitation. The doctors said a kidney transplant was the only hope. And the father, with quiet resolve, chose to become that hope. He said only this: "I brought him into this world. It is my duty to keep him in it. Nothing is greater than my son's life. For me, a kidney is just an organ, but my son is my entire life." At 85, an age when most seek care and comfort, this father chose sacrifice. He set aside his frailty, his risks, his fears, and gave a part of himself so his son could live. What makes this even more heartening is that today, even after a year, both father and son are doing well, living proof that love and courage can triumph over even the greatest odds. This is not just a medical milestone. It expands the boundaries of what we believe is possible. This is not just organ donation. This is the purest, most profound form of a father's love. Namaskar, mu Dr. Sukant Kishore Das, consultant nephrologist एवं kidney transplantation physician. आपण मैं समस्ते जानिछंती जे एंड स्टेज किडनी रोग बा अंतिम स्तर किडनी रोग पई द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होची किडनी ट्रांसप्लांटेशन. जेते बेले गोटे रोगी एमती परिस्थिति रे पहुंचे जहाँ पर कि डायलिसिस छड़ा आउ किछि रास्ता न थाए किबा डायलिसिस बारंबार करबा द्वारा रोगीर दैनंदिन जीवन यापन रे अनेक प्रकार प्रतिबंधक सृष्टि हुए, से समय रे आमे फील करिथाउ और मेडिकल साइंस भी कहे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट बा गुड किडनी प्रतिरोपण. किडनी प्रतिरोपण बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट हेले भी तार बहुत गुटे चैलेंजेस थाए. सबुठ बड़ चैलेंज होची डोनर मिलिबा. डोनर मिली गोटे लाइफ डोनर मिलिबा गोटे किडनी ट्रांसप्लांटेशन रेसिपिएंट बा पेशेंट पई बहुत बड़ चैलेंज. से क्षेत्र रे आउ किछिटा लिमिटेशन ऐड हो जाए. जदि जने परिवार रो जने लोक किडनी डोनेट करिया को चाहूची आउ से लोकर एज केते अछि, ए जिंस गोटे प्रतिबंधक सृष्टि करी आसुथला. आगुर फील करुथिले कि 65 इयर्स रु जने लोक जदि बेसी बयस हेतिबो से किडनी डोनेट करि परिबे नाही. धीरे धीरे मेडिकल साइंस धीरे धीरे एडवांस कला, एडवांस टूल सहित आमे जते बेले गोटे डोनर को प्रॉपर्ली आमे इवैल्यूएट करि पारुछु, आमे जानि पारुछु कि एज इज नो लॉन्गर ए contraindication, but age is no longer a bar. ये आम पे गोटे सिग्निफिकेंट एग्जांपल जे एडवांस एज रे भी जने किडनी डोनेशन करि परिबे और एडवांस एज रे भी किडनी डोनेशन कला परे रेसिपिएंट गोटे सुस्थ जीवन यापन करि परिबे. तो आसंतु मु आपन को देखा करेबी हमर निवास बाबू अछंती और निवास बाबू को फादर चक्रधर बाबू. तो तांकर एज फर्स्ट ऑफ ऑल निवास बाबू जिते बेले मु निवास बाबू को निजे पचारे, निवास बाबू आपनकर किडनी ट्रांसप्लांटेशन केबे हेतिला? डिसेंबर 19 2024 मसिया 2024 मसिया 19 डिसेंबर हेतिला. तो प्रिसाइजली आमे अपेक्षा करथिलु कि ट्रांसप्लांटेशन रो वर्षे परिला परे हमो जदि अवसर मिलिबो हम तांक सहित कथा हबो. तो ट्रांसप्लांटेशन रो वर्षे परे आपण ओवरऑल लेबे आपनकर क्रिएटिनिन केते रहउची?
1.1 1.2 भीतर भ्यारी करू ओके सो आपण ट्रांसप्लांटेशन पे इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन रेगुलर खाउछंती सर ओके सो ट्रांसप्लांटेशन परे निवास बाबू मोर लेस कहया गले निवास बाबू को जेते किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा जेता सेते तांकर एज लिटिल मोर देन 59 ऑलमोस्ट 60 इयर्स आइथिला तो एबे ट्रांसप्लांटेशन रो 1 ईयर बीती जाइछि एंड ही इज लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ व्हिच इज a remarkable achievement both for the patient and also for the treating team किंतु ताटू बेसी रिमार्केबल अचीवमेंट होचंती आम पाखरे जे बसचंती वयोज्येष्ठ व्यक्ति जने से भगवान को बळे बसचंती आ से सतरे निवासों को फादर आम यूनिट पई भी से जने भगवान को बळे आस्तिले काहे ना से जते बळे राजी हेतिले तांको पो को किडनी देबा पई तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम पई बहुत बड़ चैलेंज थिला कि आमे एडवांस एज रे कोन तांको किडनी नेबा पई आगु को टेस्ट करिबा की किंतु सी निजे एते आग्रही थिले तांकर मनोबल एते दृढ़ थिला से एते हाईली मोटिवेटेड थिले कि आमे समस्ते भाबिलु तांकर टेस्ट करिकि देखिबा और धीरे धीरे गोटे डोनर रो जहाँ जहाँ पैरामीटर टेस्ट करा जाए आमे से सब पैरामीटर टेस्ट करेथिलु तो निवास सब आपन को फैमिली रे जते बेले जिनसटा डिस्कशन करा गला कि फादर एज ए डोनर आसीबे तो सेटा से जो फर्स्ट ऑफ ऑल सी आपन को कहिथिले ना आपन तांको रिक्वेस्ट करिथिले एटा केते बड़ डिफिकल्ट थिला फैमिली रे डिसीजन ता नेबा नंबर तो फर्स्ट मो किडनी खराब हलाले जानिले से सेबेठू ट्रांसप्लांट करले मु तो डोनेट करबी आज्ञा और किछ असुविधा होनी मु तो डोनेट करबी आपन डोनेट करिया पई जो डिसीजन ता नेले आपन जो किडनी देबा पई निवासम को जो किडनी देबा पई आपन चिंता कले सेटा पई आपन को मन भितरु निजरो आसिला ना आपन को के कहि बारु से निजे कले अच्छा आगे आमे पेपर रे देखिया गले आपन को बयस 85 वर्ष पाखा पाखी एक्चुअली बयस आपन कर केते एक्चुअली बयस बेले बेले हमर देश रे थाए कि सर्टिफिकेट एज आज्ञा तो देखिया गले देखंतु हमें जानि छै कि 86 वर्ष तले डेट ऑफ बर्थ केते प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होतला हमें जानि ने बाबूजी को कहया विषय तांको एज मोर देन 86 इयर्स एज ऑलमोस्ट हेलानी और सेते बेले जति एते एज थिला तो सारा विश्व रे देखिया गले हमें आज गर्वर सहित कहि परिबा कि निवास आम पाखे जते रिकॉर्ड बा पब्लिश्ड आर्टिकल अछि ही इज द ओल्डेस्ट किडनी डोनर इन द वर्ल्ड आ पूर्व आम किसी लिटरेचर सर्च करूथुलु 2021 मसीह रे बॉम्बे रे जने 81 वर्षर महिला तांको पो को किडनी डोनेट करथिले ब्रिटेन रे जने 85 इयर्स रो अल्ट्रिस्टिक डोनर जने रेसिपिएंट को किडनी डोनेट करथिले तो एमती किछटा एग्जांपल अछि किंतु सबुटा एग्जांपल को कंपेयर करले निवास बाबू ऑलमोस्ट इज द ओल्डेस्ट डोनर एटलीस्ट आमे कहि परिबा कि इंडिया रे ही इज द ओल्डेस्ट डोनर मे बी ऑल द ओल्डेस्ट डोनर इन द वर्ल्ड जे किडनी डोनेट करछंती ताको पो को आउ या हम समस्त पई बहुत बड़ उपलब्धि मु आज रही संक्षेप वार्ता देबार सबुटु बड़ कारण या रहउछि कि अनेक क्षेत्र रे जो मानकर कम एज ग्रुप रो लोक भी तांको फैमिली मेंबर को किडनी डोनेशन करिबारे द्विधा अनुभव करथांती कि आमे जे किडनी डोनेट करिवु हमर काले किछि असुविधा हबो तो एई परिप्रेक्षी रे आ ए अवसर रे ही मु कहया को चाहूची जे जो माने किडनी डोनेट करिवे से माने गोटे संपूर्ण रूपे साधारण जीवन यापन करि परिबे सुस्थ जीवन यापन करि परिबे काहे ना किडनी डोनेशन करिया पूर्व आमे अनेक गोटे बेसिक टेस्ट करि थाउ सब प्रकार टेस्ट नॉर्मल आसिला परे ही गोटे लोक को किडनी डोनेशन करिया पे आमे सक्षम बोली विवेचित करि थाउ तापरे तांकर पेशेंट रो बॉडी सहित किडनी प्रॉपर मैच करूची कि नै जाको एचएलए मैचिंग और क्रॉस मैचिंग कहा जाए से सब करा जाए और सब जिनस रे हमें सैटिस्फाइड हला पर हम आगु को बढ़ू तो गोटे किडनी डोनेशन परे डोनर सुस्थ जीवन यापन करिवे तांकर सोशल फैमिली लाइफ ऑक्यूपेशनल लाइफ सब नॉर्मल हबो तांको कोनस प्रकार मेडिकेशन दरकार पड़िबनी एंड सी गोटे प्रकार सैटिस्फैक्शन भी फील करेंगे कि सी आउ जने लोक को जो रेसिपिएंट जहाँ देहरे किडनी लगिला ताको गोटे नवा जीवन देइछंती आ निवास भी जानि परथिबे कि डायलिसिस रु जते बेले मुक्ति पाइके आपण ट्रांसप्लांट करछंती आपण जीवन यापन रो डे टू डे लाइफ रे कोन चेंजेस देखुछंती नॉर्मल लाइफ मेंटेन करूछी थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक चेंज हेछि खाया करते एग्जैक्टली अब चीज नै आपण कोन काम करंती माने मो पिला पढाए यू आर ए टीचर
माने प्राइवेट टीचर देखो से जो टीचर सो डेफिनेटली देश भविष्य गढ़ से साहाय्य करुँच आदि आम ये चेष्टा द्वारा जीवन को गोटे नॉर्मल स्टाइल आने किसी परिमाण भी सक्षम हो पारिचे अवश्य आम समस्त निमित्त मात्र भगवान को इच्छा द्वारा जहाँ भी परिचालित होमें समस्ते आउ इफ विथ गॉड्स ग्रेस सी गोटे दीर्घ जीवन जापन करूँ सुस्थ जीवन जापन करूँ आ बाबूजी को भी आम बहुत बहुत धन्यवाद देवा कि तांको भलिया वयोज्येष्ठ व्यक्ति आशीर्वाद सपोर्ट परिवार प्रति आउ बेस्ट विशेष सब प्रकार समाज प्रति रही था यही वार्ता जदि समस्त पाखे पहुँचब तो विभिन्न क्षेत्र में जो फैमिली रे भी किडनी फेलियर दे लोक गति कर हतोत्साह होगा उचित नुह किडनी ट्रांसप्लांटेशन द्वारा किडनी ट्रांसप्लांटेशन रो बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटी खाली आम पाखे कहीं सारा ओडिशा रे आज बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटी अच्छी भारत विभिन्न जगार भी फैसिलिटी अच्छी तो निजे निज हेल्थ को नेग्लेक्ट न करी नियर बाय बेस्ट टू बेस्ट स्पेशलिस्ट को पाखक जाइकी उचित ट्रीटमेंट रो एडवाइस नियंतु And why I'm sharing this? Because this will prove an example that age no longer should be the only defining criteria. A complete clinical evaluation, no matter what the age is far more important before ruling out that a donor is fit or not. This expands the donor pool and also gives a chance to give the benefit of leaving donor kidney transplantation to a recipient who would have a remarkably different life after a successful kidney transplantation.